Welcome, my dear students of class 8. Today in 8th English, we are going to read the conjunctions. So, first of all, let me give you a brief gist about the definition of the conjunction, what a conjunction is. So, a conjunction is a word which joins two words, phrases, or sentences. So, conjunction is that very word which serves in joining the words, phrases, or sentences. Okay. For example, the conjunction at, and, sorry, and, but, or, otherwise. There is another conjunction nor, neither, either, etc. Okay. So, these are some examples of the conjunctions. Now, let's first of all let's read the coordinate conjunction. Okay, so this is our first conjunction with which we are dealing, that's coordinate conjunction. So I want to tell you that what's a coordinate conjunction. A coordinate conjunction is that very conjunction that joins the sentences of equal ranks, that joins the sentences of coordinate meaning equal ranks. For example, he is a poet and a philosopher. ओके, ये इक्वल रैंक है, पॉइंट भी है, फिलोसफर भी है. ओके, ही इज सैड बट होपफुल, वो सैड है लेकिन होपफुल भी है. ओके, सो दीज आर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. आई एम गोइंग टू गिव यू इन दी व्हाट्सएप group as well the definition and the examples of the coordinate conjunctions. So let's first of all uh, we will see the use of the and conjunction. Okay beta, let me start. So first of all we will read use of and. If the subject is common, if the subject is common and there is a continuity in action, we use and. Okay, उस टाइम हम and conjunction use करते हैं to join two or more sentences. Okay, so I am saying you that if the subject is common, अगर सब्जेक्ट कॉमन होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कॉमन ही होगा, वही होगा, तो वहाँ पे जो, और वहाँ पे एक्शन की कंटिन्यूटी होगी. मैं अभी बताऊंगा क्या है एक्शन की कंटिन्यूटी. तो वहाँ पे जो है एड लगता है. फॉर एग्जाम्पल, हियर द फार्मर्स वेंट टू अ कैटल फेयर. ओके, दे ब्रॉट टू काउस. याद रखना बेटा. For example, these are two sentences. The farmers went to a cattle fair. Okay. They bought two cows. Now, यहाँ पे अगर हमें कंजक्शन लगाना होगा तो हम लगाएंगे the farmers went to a cattle fair and okay bought two cows. So यहाँ पे जो subject है, that's farmers, the farmers. Okay, this is the subject word farmers. Okay, so that is the common. So if the subject is common, here the subject is common, farmers go to the cattle and farmers, the same farmers bring the cows. Okay, that's why here comes and there is continuity. Continuity क्या है बेटा? Continuity in what sense? अगेन आई रिपीट, सब्जेक्ट के बारे में, यहाँ पे भी फार्मर्स है हु गो टू द कैटल और यहाँ पे भी फार्मर्स है हु ब्रिंग दीज टू काउस. अब कंटिन्यूटी की बात मैं अगर करता हूँ देन I'll say that the farmers they go to the cattle and bring the two cows. So this is the continuity. They go, जाते हैं, लाते हैं कुछ. Second example, she will go to school. Full stop. She will meet her friends. Okay, she will go to school and meet her friends. Again, here the subject is she. Okay, about whom we are talking, the subject is she, who goes to the school and will meet her friends. Okay, this is the continuity. One, she will go to school, other, she will meet her friends. Okay, so she will go to the school and meet her friends. So again I repeat, मैं रिपीट करता हूँ कि एंड वहां पे लगता है जहां पे कॉमन होगा सब्जेक्ट और जहां पे एक्शन की कंटिन्यूटी होगी. ओके, नंबर थर्ड एग्जाम्पल, माई फादर स्टडीड. ओके, he helped his old parents. So it will go like this: my father studied and helped his own parents. Right?
Now we will read about this uh, use of but. We are in the conjunctions and our subtopic is the coordinate conjunction. So here we will see the use of the but. Okay. So first of all, we will see where the but is used. If the subject is common, but there is contrast in the sentences, we join them with but. यानी कि अगर सब्जेक्ट होगा कॉमन यहाँ पे बेटा, लेकिन जो दो एक सेंटेंस के जो दो पार्ट्स हैं उनमें आपस में अपोजिशन होगा, कंट्रास्ट होगा, देयर वी यूज बट एंड नॉट एंड. फॉर एग्जाम्पल शी वर्कड हार्ड, शी फेल्ड. क्या? शी वर्कड हार्ड, शी फेल्ड. सो दिस विल गो लाइक दिस, शी वर्कड हार्ड बट फेल्ड. तो यहाँ पे बेटा आपको पता होना चाहिए कि शी वर्कड हार्ड. देखो, वर्क हार्ड करना एंड आफ्टर दैट फेल होना, क्या आपको नहीं लगता है कि ये दो कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स हैं? लिहाजा जहाँ पे कंट्रास्ट होगा वहाँ पे बट लगता है. आबिद वर्क्स हार्ड, luck does not favor him. So it will go like this, Abid works hard but luck does not favor him. Both are contrasting. हार्ड वर्क करना और उसके बाद luck favor ना करना. Okay, so here is another example. Raju came to meet Rohit. Rohit was not at home. So this will go like this, Raju came to meet Rohit and Rohit was not at home, and बिल्कुल भी नहीं आएगा because these are two contrasting things. Okay, he had come to meet but he was not at, his friend was not at home. So coming back to the first rule where I used to write, for example, what I wrote here, my father studied. Okay, he helped his old parents. ओके, तो बेटा यहाँ पे जो है, देखिए बेटा, मैं आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ इन कंट्रास्ट विद द जो मैंने यूज ऑफ एंड में किया था. ओके, माई फादर स्टडीड, याद रखना पूरी तरह. देखो, आबिद शी वर्कड हार्ड, उसने सख्त मेहनत की. शी फेल्ड, वो फेल हो गई. शी वर्कड हार्ड, उसने सख्त मेहनत करी. शी फेल्ड, वो फेल हो गई. शी वर्कड हार्ड बट फेल्ड, बट क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि दोनों कंट्रास्टिंग है, एक तो हार्ड वर्क और दूसरा फेल. लेकिन यहाँ पे अगर मैं बैक आऊँ, माई फादर स्टडीड, मेरा फादर पढ़ा करता था, मेरा फादर पढ़ता था. ही हेल्प्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स, इसको आएगा माई फादर स्टडीड एंड हेल्प्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कंट्रास्ट नहीं है और जो सब्जेक्ट है वो भी सेम है और जो कंटिन्यूटी है वो भी है. एक तो मेरा फादर पढ़ता था और वो अपने बूढ़े माँ बाप की हेल्प भी करता था. राइट, and now we will see about the use of the or otherwise, where or is used and whether otherwise is used. So in case of any choice or warning, we join the sentences with or otherwise. So जहाँ कहीं भी sentences में कोई वार्निंग हो या कोई चॉइस हो, वहाँ पे हम sentences को join करते हैं using the conjunction or otherwise. For example, work hard, okay, full stop, you will not pass. Okay, work hard, you will not pass. These are the two sentences and we have to join them. So work hard or you will not pass, this is a warning that you have to work hard or you will fail, you will not pass. So here, my dear students, if any student says me, sir, work hard and you will not pass, that's totally wrong because here it's a warning. Okay, now work hard otherwise is also correct. Okay, both or otherwise, you will not pass. For example, number second example, don't waste your time, your father will punch you. क्या? Don't waste your time, your father will punch you. So the example, its answer will go like this, its conjunction will go like this,
Don't waste your time or your father will punch you. Okay, बात समझ में आई? Don't waste your time, otherwise your father will punish you. Both are correct. Otherwise भी आएगा और are भी आएगा. This is an what warning. Keep quiet, I shall beat you. Keep quiet or otherwise. Both are correct. I shall beat you. Okay. She must work hard. Right? She will fail. She must work hard or she will fail. This is the choice that if she works hard, she would fail. Okay. Now, my dear students, we are going to read the use of nor. Where the nor is used, it also comes under the coordinate conjunction. Okay. So we join two sentences with nor if they maintain their negative continuity. Okay. हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं नॉर से अगर वहां पे नेगेटिव जो है नेगेटिविटी कंटिन्यू हो नेगेटिविटी का फ्लो कंप्लीटली हो सेंटेंसेस में ओके यानी कि ना हो नकार हो नो हो फॉर एग्जाम्पल दे डिड नॉट गिव मी बुक्स ओके दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस they did not help me so the conjunction that will come here is like this they did not give me books nor did they help me right they did not give me books nor did they help me example number second he will not I so I before coming forward here I want to tell you my dear students that negativity जो है वो continue हो रही है did not give me books नहीं दी मुझे did not help me मेरी help भी नहीं की so दोनों में negativity जो है that gets continued second he will not come he will not send his son so वो नहीं आएगा अपने बेटे को भी नहीं भेजेगा so दोनों में कंटिन्यूटी होती है नेगेटिविटी की so here will come nor like this he will not come nor will he send his son he is number third example he is not a doctor he is not a compounder he is not a doctor nor is he a compounder okay तो जो यहाँ पे नेगेटिविटी है वो कंटिन्यू होती है कि वो एक डॉक्टर नहीं है वो एक कंपाउंडर नहीं है लाइक इट विल गो लाइक दिस ही इज नॉट अ डॉक्टर नॉर इज ही अ कंपाउंडर अनदर एग्जांपल ही डज नॉट प्ले फुटबॉल ही डज नॉट प्ले फुटबॉल नेगेटिव राइट यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं खेलता ही डज नॉट प्ले क्रिकेट nor does he play he does not play football nor does he play cricket क्योंकि दोनों में जो है नेगेटिविटी प्रिवेल होती है लिहाजा यहाँ पे नॉर आता है इस तरह ओके होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस थिंग